Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 8 of the course Object Oriented Programming. In the previous lecture, we have seen abstract data type. For example, int is an abstract data type that represents the integer in mathematics. Then we have seen container classes. Container classes is a class that contains the object of other classes, and we have seen the motivation for the container classes also comes from the real world. That is, in real world we have everything in the container. For example, a book contains pages within the cover or the binding, and that binding or a cover is basically a container. And then we have seen a proxy classes that provide us a mechanism to truly implement the information hiding principle. That is, you not only hide the class members function definition, but also the definition of the class and the private data member of the class from the user or the client. So इसमें हमने लाइब्रेरी बना के बड़ी डिटेल के साथ देखा था कि हम किस तरह से इसको प्रॉक्सी क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो इसमें हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास थी, एंड देन वी हैव द इंटरफेस क्लास दैट इज एक्चुअली द प्रॉक्सी क्लास, एंड थ्रू दैट इंटरफेस क्लास द यूजर और द क्लाइंट इंटरैक्ट्स विद द इम्प्लीमेंटेशन क्लास. And then we have seen a little about operator overloading. In today's lecture, we will see in detail that what is operator overloading. We'll see different examples, and then we will overload unary operators, that is plus plus, minus minus operator. These are the unary operators. Unary means that these operators required only one operand, right? So for example, there is a binary operator, plus, minus, multiply, divide, mod. These are the binary operators. These operators required two operands, and plus plus, minus minus, these arithmetic operators required only one operand. Then we will see how we can pass argument to overloaded function, and in which we will see the post increment statement, right? Now, operator overloading. In the last lecture, I've shown you the example that we can add two distance object d1 d2 by passing these two objects by value or by reference to a function. Add distance, let's say the name of the function, or add objects, and it will add two objects, and in the second case it returns the object. In the first case it stores the value of the addition of these two distance d1 and d2 in the object d3, right? So this can be changed into much readable format, that is d3 is equal to d1 plus d2. So now this is much more easy to understand format. Now in this particular example, we overload the addition operator that performs the addition of two distance object. Why I say we overload? Because this addition operator is already used by C language, C++ language, to perform the addition of integers, integer floats, like this, right? So we अब हमने इसे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अचीव कर ली है कि we can add two distance object, two objects of class distance using the same operator add, right? So this is called basically the operator overloading. Examples of C++ overloaded operators are addition and subtraction operator. So you can perform the addition of the two numbers, two integers, and two floating point numbers, and two arithmetic pointers. So जब pointers को आप arithmetic addition perform करेंगे, it has a different effect as compared to the addition of two integers. So that means that addition operator is already overloaded, and same is the case with the subtraction operator. Then stream insertion operator, that is less than sign, and extraction operator greater than sign, they are also overloaded, and these are basically bitwise operator. Less than is a bitwise shift operator that is used as a stream insertion operator, and these operators are overloaded in C++ standard library, right? Now syntax of overloaded operator function. An operator is overloaded by writing a non-static member function definition, because whenever the operator, you overload an operator, you have to
write a function against that operator in the definition of that class. So जिस object के साथ आप चाह रहे हैं कि for example if I want d1 plus d2, so I want the addition operator to be overloaded to add two distance objects. So I have to provide the definition of a function within the distance class that must be executed whenever I perform the addition of two distance objects, right? So that function, जब भी वो function execute होगा तो basically वो function जब invoke होगा, we can say then actually उसके साथ कोई ना कोई invoking object होगा. There must be some object with that operator that actually invoke the function for that operator that is written within the definition of that class, right? For example, we have a counter class and we create an object of counter class C1 and then we write C1 plus plus, right? Or plus plus C1 pre-increment statement. So plus plus, we overload the plus plus operator for counter class, then there must be some function in the counter class. Now if we write plus plus C1, now C1 is the invoking object to invoke the function that is there in the definition of the counter class, and that function should be invoked whenever whenever plus plus pre-increment operator is present with the object of counter class. Similarly, if you write plus plus C2, now C2 is the object of counter class, and here plus plus C2 in this statement, C2 is the invoking object that invoke that routine that is present in the counter class for the plus plus operator, right? So this means that the function that is there in the class for the overloaded operator, that function should be a non-static function, right? Because it is invoked with each object of that class. So अगर एक class में अगर आप 3-4 operators को overload करना चाहते हैं, you have to write the definition of each of that function in the class, ठीक है? So एक operator है plus plus, एक minus minus है, so plus plus के लिए separate function होगा, minus minus के लिए separate function होगा class में. So function name becomes the keyword operator. So function name किस तरह से शुरू होगा? Operator, then followed by the symbol for the operator being overloaded. Operator keyword है, उसके बाद किस operator को overload करना है वो उसके बाद आ रहा है, and then the function bracket. These are the function brackets that contains the parameter or no argument or some argument, and then the curly bracket that tells the block of the function, right? Body of the function. So in this particular example mein we are overloading the addition operator. So function name operator plus, so function name become operator plus would be used to overload the addition operator plus. So assignment operator may be used with every class to perform member wise assignment of the data member. So assignment operator को भी आप overload कर सकते हैं जो कि member wise assignment करेगा. For example, we have object D1 and D2, so it will copy the content of the private data member of D2 into the private data member of D1. So D2 जो object है और D1 object distance class का है, so D2 के feet और inches वो D1 के feet और inches में respectively copy करेगा, right? So assignment operator. Then precedence and associativity and number of operands. So precedence means the priority of operator, which operator should be performed first, right? So the precedence means which operator to solve first. For example, in the case of arithmetic operator, plus, minus, multiply, divide, mod, equals, the multiply, mod and division has the highest priority, and then comes the plus and minus operator, and then comes the equal operator. So the operator precedence of an operator cannot be changed by overloading. So अगर आपने addition operator को overload कर दिया है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि उसकी precedence भी change आप कर सकेंगे. No, वो same अपनी precedence जो उसका level है, जो उसका priority level है, उसी पे ही वो execute होगा, right? For example, if you overload multiplication operator to multiply two distance object, let's say, and then you overload the addition operator to add two distance object, and then if you write the expression D1 plus D2 multiplied by D3. Now in this case, the first operation that is performed will be the multiplication operation, that is D2 multiplied by D3, right? So operator की priority को आप change नहीं कर सकते by overloading operator. Similarly,
The associativity of an operator cannot be changed by overloading. Associativity means that if the same priority operators occur at the same level, for example, if you have an expression A multiplied by B divided by C, now multiply and division have the same priority, now they occur at the same level, now you have to solve it from left to right, and that is called associativity of an operator. So either it is from left to right or from right to left. So in C we will follow left to right. So in C or C++, the associativity of an operator is from left to right, and by overloading operator it is not possible to change the associativity of an operator. And then overloaded unary operator, plus plus minus minus remains unary operator. So अगर आपके पास जैसे plus plus operator है, minus minus operator है, they are the unary operators, means that they required only one operand. So if you overload these operators, they still remains the unary operator. You cannot convert them to binary operator or to ternary operator. ठीक है. So number of operands जो operator के साथ हैं, जो initially mention किए गए हैं C में, वो वैसे ही रहेंगे. Plus plus के साथ एक operand आएगा, minus minus के साथ एक operand आएगा. So you cannot change it to the two operands. You cannot write D1 plus plus D2, right? And you can say, okay, the plus plus operator performs the addition of these two objects. No, you cannot do like this, because plus plus operator के साथ हमेशा एक ही operand आएगा, right? And same is the case with minus minus. Similarly, overloaded binary operators remains binary operator. So अगर binary operators हैं plus minus multiply divide equal, जिनके लिए दो operands चाहिए, वो हमेशा बाइनरी ऑपरेटर ही रहेंगे, बेशक आप उनको ओवरलोड कर लें, राइट. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट टू चेंज द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स ऑफ एन ऑपरेटर बाय ओवरलोडिंग दैट ऑपरेंड. सिमिलरली इट इज यू कैन नॉट चेंज द प्रेसिडेंस and associativity of the operators by overloading that operator. Creating new operators. It is not possible to create new operators. Only the existing operators can be overloaded. So जो existing operators आपके पास हैं C में, उन्हीं को overload किया जा सकता है, और उनमें से भी कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं, 4-5 ऑपरेटर जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते. We have seen these operators in the previous lecture. For example, static can be used for the exponential, to calculate to show the exponential value in some programming language. So but I cannot create this static operator in or I can say, okay, I can overload static operator, right, to calculate the exponential value. No, it is not possible in C. Why? Because static is not an operator in C or C++ language. ठीक है, C++ language में static double static कोई operator नहीं है. So this means that कि आप इस operator को इसको overload नहीं कर सकते, because ये operator है ही नहीं. सिर्फ और सिर्फ जो existing operator हैं उन्हीं को overload किया जा सकता है, और उस overloading में you cannot change the precedence, associativity and number of operands of that operator. So static is not in the list of existing operators, so it cannot be overloaded. So attempting to create new operators via operator overloading is a syntax error, right? So आप कोई नया ऑपरेटर नहीं बना सकते. You cannot say static को मैं यूज़ कर लेता हूँ, static slash को यूज़ कर लेता हूँ, for example, something like this. You cannot create a new operator. Operators for fundamental types. The meaning of how an operator work on fundamental types cannot be changed by operator overloading. Now what does that mean? So if the plus operator or the addition operator is used to perform the addition of two integers to floating point values, floating point or integer or floating point values. So if I overload that operator to perform the addition of two distance object, so it is so इससे ये नहीं होगा कि वो जो addition की जो basic functionality है, जिससे वो दो integer values को add कर सकता है या float को add कर सकता है या float integer को add कर रहा है, वो ख़त्म हो जाएगी. नहीं, we overload that operator. So whenever in the program it will check the operands of the operator, right? So अगर मैंने distance class में addition operator को overload कर लिया है to perform the addition of two objects, right? So in my program, when the compiler start compiling the program, it look for the type of the operand,
ठीक है, अगर प्लस एक आ रहा है x plus y where x and y are integer, now it will execute the addition function that is present in the C++ library to add two integer value, and whenever it encounter a statement like d1 plus d2, now d1 and d2 are the object of distance class, now it will look for the overloaded function for the addition ऑपरेशन इन द डिस्टेंस क्लास, ठीक है। सो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अगर मैंने किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया है तो उसका जो इनिशियल जो इसका फंक्शन था, जो पहले वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, वो भी चेंज हो जाएगा। नहीं, वो पहले जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो परफॉर्म करता रहेगा वैसे ही। दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, वो स्टिल इट इज़ एबल टू ऐड टू इंटीजर्स, बट you overload its functionality basically, and now it can add to distance object as well, right? So the meaning of how an operator works on fundamental types cannot be changed by overloading an operator. For example, programmer cannot change the meaning of how addition or plus sign adds to integers. So plus sign दो integers को add करता है, it will be remain there even though you overload this operator plus operator in multiple classes, right? So मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। whenever a compiler encounter addition operator, it will look at the type of the operand. So if the type of the operand is the distance, both are the distance object, it will look for the overloaded additions routine in the distance class. Otherwise, if the type of the operand is the fundamental type, integer, float, then it will execute the function from the C++ library. So operator overloading works only with object of user defined type or a mixture of an object of user defined type and an object of fundamental type. Okay, we will see these things in detail. Now let's come to the example. Now C++ or C++. So this can be achieved by overloading plus plus and minus minus unary operator. Let's assume that C1 and C2, C1 are is an object of counter class, और अगर आप इस तरह से परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि C1 plus plus, or if you want to perform C1 minus minus, then you have to overload plus plus and minus minus unary operator in the counter class. Now the statement like this, dest3 is equal to dest1 plus dest2. So dest1 and dest2 are the object of distance class, and we want to add these two distance and assign it to the dest3. Now to overload this addition sign, so in this case we have to overload assignment and the addition binary operators. इन दोनों को overload करना होगा. It does not mean that plus equal is also overloaded for distance object, right? So because this statement is something equals to like this, right? So अगर हमने addition को overload कर दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि plus equal sign भी जो operator है वो भी overload हो गया for the distance object. For example, if we have a statement like dest1 plus equals dest2 or dest1 minus equals dest2, right? Then we have to overload, or we have to write a separate function for plus equal operator to overload plus equal operator and to overload minus equal operator in the distance class. So overloading the addition operator and the assignment operator does not means that we can perform the operation with the operator plus equal or minus equal in the class, right? So you have to overload each and every operator separately and provide a function against that operator in the class, and that function will be executed whenever that operator is encountered with the object of that class. Now overloading unary operator. So let's start from the very basic, that is plus plus and minus minus. So example of unary operators are increment and decrement operators, that is plus plus and minus minus, and the unary minus, that is minus 33. So counter class के example हम देख रहे थे. So counter class का एक private data member है, that is count, that is used to keep track of the count. So it is to create an object to count some event, the occurrence of some event, and it has only one private data member, that is unsigned int count. So object of that class were increment the count value by calling the member function.
and that member function is c1 dot increment count. So we have seen that the same task that is performed by overloading operator can be performed by calling the function explicitly. ठीक है, so आप कोई function को भी के through भी ये achieve कर सकते हैं task, but for that you have to call a function. For example, add test function. In order to achieve the same task with the operator, you have to provide a function definition that should be executed when that operator appears with the object of that class. So अभी तक हम counter class में जो increment कर रहे थे, we were incrementing by calling a function increment count, and it will increment by 1 in the private data member of C1 object. So एक value का इजाफा कर देगा C1 का जो private data member है count उसमें. But it would be more readable if we could have used the increment operator plus plus. For example, if we use plus plus C1, right, pre-increment, so it will also add 1 in the private data member of count, but for that we have to provide the function in the definition of counter class. So plus plus C1 that do the same task as done by the increment count, but इसके लिए हमें जो counter class है उसमें एक special function रखना पड़ेगा, और उस function का नाम क्या होगा? Operator, that is the keyword, and then the actual operator comes. Operator space the actual operator that you want to overload, and then the bracket of the function. Now when that statement appear in the program, that function that you have written in the counter class will be executed. So counter class example. So this is a counter class example. In this example, we have one private data member, that is count. In the constructor, whenever we create an object, we initialize it with 0, and then this is a get count function to return the value of the count, and then this is a function that start with the keyword operator space the operator you want to overload for that class object, and then the parenthesis and curly bracket start and end, and within the body of this function you write the statement plus plus count, that is you are incrementing the value of count. Now अब एक चीज देखें कि जब भी प्लस प्लस के साथ प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, for example C1 plus plus C1, now C1 is the object that causes this function to be executed, right? So इस function को execute करने का सबब कोई object बनेगा, so उस object का जो private data member होगा count, उसकी value को increment कर दिया जाएगा, that's it, right? Now the return type of that function is void, because this function returns nothing. We will see that we need there are some situation where we have to return some value from that function, right? We will see that situations. Now let's come to the main function. This is the main function where we are creating, in the first statement we are creating two objects. Please note one thing, that this is the prefix, that means pre-increment. This overloaded function is for the pre-increment plus plus operator, right? We have a plus plus operator for the post increment, we will see it, but this is the plus plus operator for the pre-increment statement, that is for plus plus C1. It won't work for C1 plus plus, right? So you can see here in the first statement, when the first statement is executed, the memory is allocated for the C1 object and C2 object, that is these two objects are created, and the values, the private data member of these two objects are initialized with 0, because this is what we have said in the constructor. ठीक है, 0 से initialize कर दिया इसे, and then there are two cout statement that are, and we are calling function C1 dot get count. So C1 का जो count की value है वो print हो जाएगी, that is 0, and C2 के count की value, that is also 0, right? And then we have a statement C1 plus plus C1. Again I'm telling that the operator plus plus function that we have include in the counter class is for the pre-increment plus plus operator. It won't work for the post increment operator. For the post increment we will see in the later slide today. So the first statement is actually plus plus C1.
So this, now the compiler will check that this plus plus operator now comes with an integer, float, or the particular object of user defined type. Now here the plus plus operator comes with the object of user defined class, so it will look for the operator plus plus function in that class. So C1 class, C1 जो object of a counter class है, so it goes to the counter class and look for the operator plus plus function and then execute that function. So this means that ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का सबब कौन सा ऑब्जेक्ट बना, C1 ऑब्जेक्ट बना. सो C1 ऑब्जेक्ट के जो प्राइवेट डाटा मेंबर है, दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल विद इन द डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन. सो प्लस प्लस C1 जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल विल कम टू द ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन एंड इंक्रीमेंट द काउंटर वैल्यू हेयर. सो दिस मीन्स दैट वो ऑब्जेक्ट C1 की काउंटर वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और C1 की काउंटर वैल्यू 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी. ठीक है, सो इट प्रीवियसली 0 थी और 0 से चेंज होके वैल्यू 1 हो जाएगी. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्लस प्लस C2 सेमीकोलन. सो मैंने तीनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख दी हैं बिकॉज स्लाइड में इतनी जगह नहीं थी. सो आप यू कैन राइट दीज थ्री स्टेटमेंट इन सेपरेट लाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू राइट इट इन द सिंगल लाइन. सो द सेकंड प्लस प्लस स्टेटमेंट इज प्लस प्लस C2 semicolon. Now so here the C2 is the object that causes the operator plus plus function of the counter class to be invoked. So यहाँ पर C2 का जो counter है, that will be incremented from 0 to 1. Now the third statement is again plus plus C2. Now here again the C2 object causes the operator plus plus function of the counter class to be invoked and the private data member of the C2 will be directly accessible in that function. So counter C2 का जो counter की value थी, that is 1. Now it is incremented again and it will become 2. Previously 1 है and then 2 हो जाएगी. Then we have a cout statement. This statement, it will print the value of the count of C1 object, that is 1, and the value of C2 object, that is 2, right? So the point to be noted here is that the compiler look for the operand of this plus plus operator. So if the operand is an integer, so it will execute the C++ library function that is present there to increment the value of the integer. For example, if we have integer x is equal to 1 and if we write plus plus x, right? So अब इस केस में वो प्लस प्लस एक्स में ये वाला फंक्शन जो है ऑपरेटर प्लस प्लस का जो काउंटर क्लास हमने मेंशन किया, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. इट विल एग्जीक्यूट द बिल्ट इन फंक्शन बिकॉज प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ इंटीजर आ रहा है, फंडामेंटल टाइप आ रही है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस प्लस ऑपरेटर के साथ C1 ऑब्जेक्ट आ रहा है, C2 ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड देन C2 आ रहा है. C1 एंड C2 आर द ऑब्जेक्ट ऑफ, they are not the fundamental objects, they are object of the user defined class, that is counter, right? Now it will look for the operator plus plus function in the counter class. Let's go to the program and execute it. Now this is the counter class, a private data member, unsigned in count, public data member, the function constructor, and then this is the getter function, and then this is the overloaded plus plus operator function. This is the overloaded plus plus operator function, and this overloaded operator function will work only with the pre-increment statement. So for example, if I compile this program, there is no error, but let's say if I write C1 plus plus, okay, now let's see if there is an error or not. Okay, so no operator plus plus int declare for the postfix plus plus. So postfix के लिए नहीं है, prefix के लिए है. That means pre increment के लिए तो हमने ऑपरेटर मेंशन किया है डेफिनेशन में काउंटर क्लास की, बट यहाँ पर जो एरर आ रहा है बता रहा है कि आपने postfix के लिए नहीं किया. Okay, we will do it later on. Okay, let me comment out this. And there is one more thing. For example, if I have an integer x equal to 1, right, and if I do here plus plus x and then prints the value of x,
as well. So slash n x is equal to राइट. सो वैल्यू x की क्या है, 1 है. सो लेट्स सी इधर इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा. सो ये इसलिए मैंने लिखा है ये बताने के लिए कि अगर आप किसी भी ऑपरेटर को अपनी यूज़र डिफाइन जो आपकी क्लास है उसके लिए जब ओवरलोड कर देंगे, इट डजेंट मीन कि उसकी जो बेसिक जो फंक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो ओवरराइट हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. कंपाइलर विल लुक के प्लस प्लस के साथ किस टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है. इंटीजर टाइप का आ रहा है, सो इट विल एग्जीक्यूट द रूटीन फ्रॉम द लाइब्रेरी. काउंटर टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इट विल एग्जीक्यूट दिस फंक्शन. नाउ लेट्स कंपाइल इट अगेन, ओके, एंड एग्जीक्यूट इट. नाउ यू कैन सी 0 0 एंड देन x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है. इसका मतलब इंक्रीमेंट परफॉर्म हो गया. C1 ऑब्जेक्ट में हमने एक इंक्रीमेंट किया था, C2 के साथ 2 दफ़ा प्लस प्लस लिखा है, तो इसकी वैल्यू 0 से 2 हो गई है. राइट. I hope now you get an idea what is an operator overloading. The operator keyword. The operator keyword is used to overload the plus plus operator. It is used to overload any operator, right? Plus plus operator, unary operator, or any binary operator, or any other logical operator or relational operators. So void plus operator plus plus, that is the function name. Void is the return type, and we are not passing any parameter to that function. So the return type void in this case comes first, followed by the keyword operator, followed by the operator itself, that is plus plus, जिस operator को आप overload करना चाह रहे हैं. So अगर मैंने plus operator को overload लिखना है, then मेरा function बनेगा void operator plus, right, and then bracket. It depends whether we want to return any value from that operator function or not. Right, we will see it how we can return. And finally the argument list enclosed in the parenthesis, that is also optional whether you want to pass some argument to that operator function or not. Right, we will see when we need to pass some argument to the operator function and when not. So in this plus plus case we do not need to pass any argument. So this declarator syntax tells the compiler to call this member function whenever the plus plus operator is encountered with the object of counter class. अगर plus plus operator integer के साथ आएगा तो वो फिर built in plus plus का जो routine है, जो function है, उसको execute करेगा जो C++ library में मौजूद है. The compiler can distinguish between the overloaded function in the following ways. Data type of the argument that we have already discussed, and the number of their arguments. The only way a compiler can distinguish between overloaded operator is by looking at the data type of their operands. So if the operand is the basic type such as int, then the compiler will use its built-in routine or built-in function to increment an int. So if the data type is not an int, it's a user-defined type, for example counter, then it will look for the corresponding overloaded function, corresponding function for that operator in the counter class. Operator arguments. The plus plus operator is applied to the specific objects as in the expression plus plus C1, right? So C1 is an object of counter class that calls the function that is present in the counter class for the overloaded operator plus plus to be executed. So what does this operator increment? Basically it increments the count data in the object of which it is a member. Since the member function can always access the particular object for which they have been invoked, this operator is required no argument. So इसमें argument की ज़रूरत है ही नहीं है, because आप C1 ऑब्जेक्ट के, बिकॉज इस केस में प्लस प्लस C1 इस स्टेटमेंट में, इस केस में C1 ऑब्जेक्ट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट बन रहा है ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का. सो C1 के जो प्राइवेट डाटा मेंबर है दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल एंड यू कैन इंक्रीमेंट दीज. द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ C1 दैट इज काउंट
and then there is no need for the operator arguments. Operator return values. Okay, so what if we have C1 is equal to plus C2 statement? Is it possible to write this statement in the program? So हमने अपनी क्लास काउंटर क्लास में प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, राइट? बट प्लस प्लस ऑपरेटर का जो रूटीन है, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. So this means that if we write C1 equal to plus C2, then that will be this is not possible, और ये C2 में C1 की वैल्यू को C1 ऑब्जेक्ट में C2 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को असाइन नहीं करेगा. Why? Because ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन जो काउंटर क्लास में है, इट वोंट रिटर्न एनीथिंग, राइट? सो जब सबसे पहले इसमें क्या कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? C2 ऑब्जेक्ट will cause the operator plus plus function to be executed, and that function will increment the value of the private data member of C2 object, and it returns nothing. So if it returns nothing, then we do not have anything to assign to C1 object. This means that this is not possible with the current situation, with the current function. Why? The reason is very clear. I have already explained it. The plus plus operator is defined to have a return type of void in the operator plus plus function, while in the assignment statement it is being asked to return a variable of type counter, right? So the normal plus plus operator applied to the basic data type such as int would not have this problem. So आप integer के केस में लिख सकते हैं y is equal to plus plus x, because बेसिक टाइप्स के लिए इस रूटीन को ऑलरेडी हैंडल किया जा चुका है, बट काउंटर क्लास के लिए अभी तक हमने इसका कोई इसको हैंडल करने के लिए ऑपरेटर प्लस प्लस की रूटीन को फंक्शन को चेंज नहीं किया. सो वी नीड टू चेंज ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन इन ऑर्डर टू परफॉर्म this statement to be executed successfully, that is C1 is equal to plus plus C2. So C1 is equal to plus plus C2 को successfully execute करने के लिए we need to change the operator plus plus function, right? किस तरह से change करना पड़ेगा? Let's see the counter class again. Now this is the function operator plus plus, right? That will be invoked whenever the pre-increment, that is prefix plus plus operator occur with the object of counter class, and now this function returns the counter object by value. ठीक है, ये counter object by value return कर रहा है. So what tasks are performed inside this function? It first increments the value of the count. किसके count की value को increment करेगा? जो object इस routine को एग्जीक्यूट करने का सबब बनेगा, उसके काउंट की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट कर देगा, एंड देन व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, एंड इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ इट्स ओन काउंट टू दैट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट काउंट, एंड देन रिटर्न दैट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, राइट? सो इन द मेन फंक्शन, so this statement is actually, what is this statement? This statement is actually, first it increments the value of C1, right? So let's assume the case of integer. So if we have y is equal to plus plus x, then what does that mean? It first increments the value of x, then assign the value of x to y. Now in this case, it first increments the value of C1 and then assign the value of C1 to C2 object. So वो किस तरह से assign होगी कि सबसे पहले ये जब प्लस प्लस C1 एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन जब ये फंक्शन इन्वोक होगा तो ये काउंटर को प्लस प्लस करेगा, C1 का काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा, देन इट क्रिएट्स अनदर ऑब्जेक्ट, C1 का काउंटर की वैल्यू उस काउंट जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट का काउंट है उसको असाइन कर देगा और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को बाय वैल्यू रिटर्न कर देगा, एंड दैट विल बी असाइन टू C2. सो इट्स लाइक C2 इज इक्वल टू टेम्प. सो टेम्प के जो काउंट की वैल्यू है दैट विल बी असाइन टू count of C2 object, right? So let's execute it step by step. First it will create two objects, right, and assign the value 0 to the private data member of these two objects, that is count, and then we have C1.getCount and C2.getCount getter functions that gets the value of the private data member of C1 and C2 object. Now the program output would be C1 is equal to 0 and C2 is also equal to 0. Initially they are 0. Now the next statement is this one, C1
plus plus C1. So that is very familiar statement. Now so plus plus C1, now C1 becomes the invoking object to execute the operator plus plus function present in the counter class, and that is this function that is already present in this class, right? And then the first statement here is it increments the count value. किसके काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा? C1 के. So C1 के काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी. So 0 थी पहले वैल्यू और अब वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, right? And then it creates a temporary objects with the name temp, and then assign temporary object नहीं, ये object बनाएगा. We can say it creates an object with the name temp, T-E-M-P, and then temp के count में जो C1 के count की value है that will be assigned and it will return the temp object by value. So जहाँ पर हम उसको मेन फंक्शन में कहीं पर इसको कैच नहीं कर रहे, दैट मीन्स वी आर नॉट असाइनिंग द वैल्यू ऑफ टेम्प टू एनी काउंट ऑब्जेक्ट, राइट? सो वो वैल्यू लॉस हो जाएगी, राइट? सो देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज C2 is equal to plus plus C1. Here this is actually the combination of two statements, that is plus plus C1 and then C2 is equal to C1, right? So plus plus C1 जब execute होगा, it will increment the value of the count of C1 object and then it returns the object that contains the value same as the C1. So वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू सेम होगी जो C1 के प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू है, राइट? तो सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा C1 के काउंट को. तो C1 का काउंट पहले 1 था, अब इसका काउंट 2 हो जाएगा, 1 and now it becomes 2. Then it's create a temp object here. temp object जब बन जाएगा उसके बाद ये temp के काउंट में C1 की काउंट वैल्यू असाइन कर देगा, C1 की काउंट की वैल्यू असाइन हो जाएगी and then it returns the temp. Now the statement here becomes C2 is equal to temp basically, right? So this operator plus plus function return an object of count class. Now you are assigning the value of temp object to C2. So C2 के जो private data member है count उसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, right? So it is same like if a function returns an integer. For example, you have an add function that you pass 2 integer to that function and it returns you an integer value, right? So what you write is result is a variable. You write the statement become result is equal to add bracket के अंदर x comma y. So you are passing x and y to variable to the add function. So add function क्या करेगा, उन दोनों integers को add करेगा और रिटर्न कर देगा रिजल्ट को. सो जो भी रिटर्न वैल्यू होगी दैट विल बी असाइंड टू द वेरिएबल रिजल्ट इन द मेन फंक्शन. सो जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा प्लस प्लस ऑपरेटर, ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है यहाँ पर प्लस प्लस C1. सो ये जो स्टेटमेंट जो भी वैल्यू रिटर्न करेगी दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ काउंटर क्लास एंड हेयर वी हैव ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ काउंटर क्लास. सो सेम टाइप है, सो असाइनमेंट हो जाएगी. सो जो रिटर्न ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू है दैट विल बी कॉपी टू द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ C2 ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो C2 ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी इस तरह से 2 हो जाएगी यहाँ पर. एंड देन इन द सी आउट स्टेटमेंट वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू. सो जब वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो अब C1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू 2 आ जाएगी और C2 ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है? Now let's go to the program and see its execution. So this is the counter class. It contains one private data member and this is the public section. Okay. And then from the main we are calling this function, right? So this is same as y is equal to plus plus x. So it will increment the value of x first and then assign the value of x to y. So the plus plus routine in the counter class should do the same task
ठीक है, उसको सेम टास्क करना चाहिए और वो सेम टास्क परफॉर्म कर रही है। किस तरह से? सबसे पहले वो C1 के काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, इट बिकम्स 2 एंड देन इट क्रिएट्स अनदर ऑब्जेक्ट whose name is temp, और temp के जो काउंट में वो C1 का काउंट की वैल्यू साइन कर देगा एंड देन उसको रिटर्न कर देगा, राइट। सो जो भी रिटर्न ऑब्जेक्ट होगा नाउ दैट विल बी असाइन टू C2 ऑब्जेक्ट। सो उसके प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू, रिटर्न ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू C2 के प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू में कॉपी हो जाएगी। लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम फर्स्ट and execute it. So this is the result, C1, C2, C1 और C2 की वैल्यू 2 है, right? So दोनों की वैल्यू इनिशियली 1 थी एंड देन यहाँ पर एक दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ C1, यहाँ पे दूसरी दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ C1, सो वैल्यू इसकी 2 होगी एंड देन दैट वैल्यू विल बी असाइंड टू C2। यहाँ पे एक और चीज़ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। इफ इट इज द स्टेटमेंट लाइक C1 plus plus, then this means that first it will copy the value of C1 into C2 and then increment the value of C1, right? So the post increment and the pre increment are the two different things. Let me clear these things to you in this here. So let's say we have integer x 10 and y. So y is equal to, if I write plus plus x and then C out, x is equal to x and y is equal to y end line. So let me comment out all these things because now we are moving towards the post increment operator and the things must be clear. So यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड x। सो सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा दैट इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन। सो व्हेनेवर द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर अकर्स, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट, एंड देन द एनी अदर ऑपरेशन। द सेकंड ऑपरेशन इज द असाइनमेंट ऑपरेशन दैट विल बी परफॉर्म आफ्टर द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेशन। सो यहाँ पर पहले प्री इंक्रीमेंट होगा, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x बिकम 11, देन इट विल बी असाइन्ड टू y। सो here in this cout statement both the value of x and y are 11 basically. So let's compile and execute. So x is 11 and y is 11, right? Now let's say what is the case of the post increment. Now post increment means that you have to perform the increment at the end of every operation. So the other operations are the assignment. So first you perform the assignment, that is the value of x will be copied to y. So y के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10 and then the value of x will be incremented. So here in this case, in this C out, the value of x is 11 and the value of y will be 10. X is 11 and y is 10, right? So that is the difference of pre-increment and post-increment. Nameless temporary objects. So in the previous example we have created an object that is in the operator plus plus function, and that is this object with the name of temp. We assign the value of invoking or the handler private data member to that object and then return that object, and that will be assigned then C2. So we can avoid this thing and we can have a nameless object and we can return that object, right? So consider this class. Now in this class what we have included another constructor, that is a constructor with one argument. We pass some value to this constructor and it assigns that value to the private data member of this newly created object. Now in the operator plus plus function, what we make changes in that function is that we invoke that constructor, right? So when we invoke that constructor and pass the value count to that instructor, so it will create an object and initialize it with initialize its data member with that count value जो हम यहाँ पे provide करेंगे उसके साथ, and then return that object. और इस function की return type क्या है? Count है. Now that
is the object that is created in the memory, and that is actually the nameless object. इस object का कोई नाम नहीं है, but you initialize that object with some value and you return it, right? So that is a more efficient way than writing these three statements. Now you do all the things in this one statement. So the main function remains the same. It remains the same. ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा main function को. Now let's go back to the program and change it to the nameless object, right? Okay, let me comment out this first. Okay, this is the same as the previous program. Now here we want to change, and we return counter count COUNT, and we have to provide a constructor with one argument, counter integer, let's say C, initialize it with C, and then these are the function body, and there's nothing in the function body, right? Now this constructor will be invoked here. In the main function we are not invoking a constructor with one argument, we are invoking just the default constructor, right? So let's compile it and execute it. So that it has the same effect, but the only thing that we have changed here, and now this is actually the nameless object. So constructor जब भी कॉल होगा object बनेगा, उसको वैल्यू से इनिशियलाइज भी कर दिया हमने. So जब object बन गया, that is a nameless object. This object doesn't have any name, but we are returning this object by value from the place where this plus plus operator function is invoked, and that is here. So यहाँ पर वो object आ जाएगा, and next statement is the assignment statement. So उस nameless object की value assign हो जाएंगी C2 को, right? Now let's see what is the postfix notation. So far we have seen the increment operator used only in its prefix form, right? So I have shown you the example with the simple integer, what is the postfix and what is the prefix, and what is actually prefix is the pre-increment and postfix is the post-increment, or it could be a pre-decrement or post-decrement. ठीक है, माइनस माइनस भी हो सकते हैं और प्लस प्लस भी हो सकता है. So this is the pre-increment or the prefix statement. What about the postfix, where the variable is incremented after its value is used in the expression? Now C1 plus plus, so that is the postfix expression. So for that postfix expression we have to write a separate routine or separate function in the definition of the counter class. Now in the counter class you can see there is a one new function. So constructor with, this is a plain constructor, default constructor, constructor with one argument, this is the getter function, and then this is the pre-increment function, and then here is the post increment, right? So post increment जब भी a plus plus operator exist करेगा किसी भी object के साथ counter class के, this function will be executed, and to make it different from the pre-increment function, C++ uses a keyword integer. ठीक है, so this integer is not an argument, this is just here to mention that this function or this routine is for the post increment operator. ठीक है, अब let's see इसकी डिटेल में देखते हैं कि हो रहा क्या है. पोस्ट इंक्रीमेंट में आप क्या कर रहे हैं? ओके, पहले देखते हैं प्री इंक्रीमेंट की रूटीन में क्या हो रहा है. दिस रूटीन इज चेंज अ लिटिल बिट, राइट? नाउ वी आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड व्हाट वैल्यू वी आर पासिंग? वी आर परफॉर्मिंग प्री इंक्रीमेंट विद द काउंटर. That means the first the value of counter will be incremented and then this value will be passed to the constructor. ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? If we have C1 is equal to plus plus C2, so C2 की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट किया जाएगा and then that value will be assigned to C1, right? So यहाँ पर पहले C2 की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया है and then this value will be assigned to a newly nameless object and then that object will be returned
जब रिटर्न होगा तो वो C2 को असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा उसमें क्या किया जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल तो किया जा रहा है, बट काउंटर को यहाँ पर, जो काउंटर एक इंटीजर अनसाइंड इंट है, उसमें जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं दैट इज द पोस्ट इंक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट जब भी इंटीजर वैल्यू में होगा दैट विल बी परफॉर्म एट द एंड। सो फर्स्ट द फंक्शन इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा विद द करंट वैल्यू ऑफ काउंटर। काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी इस केस में, इस केस में काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, ठीक है। सो काउंटर की प्रीवियस वैल्यू से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, नेमलेस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ द काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड, ठीक है, और वो जो नेमलेस ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो लेट्स एग्जीक्यूट द मेन फंक्शन स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट C1 C2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, C1 C2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, दोनों की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एंड इफ वी वांट टू प्रिंट दीज वैल्यूज, द वैल्यूज आर 0 and 0. The next statement is plus plus C1. That is this statement, right? So plus plus C1 is a simple pre-increment statement, and for that statement, this function will be invoked, right? Operator plus plus function will be invoked. Although वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट में सेव नहीं कर रहे, it doesn't matter. लेकिन वो C1 को इंक्रीमेंट कर देगा। सो सेम फंक्शन इज यूज फॉर प्लस प्लस C1 एंड सेम फंक्शन इज यूज फॉर C2 इक्वल्स टू प्लस प्लस C1, राइट। सो व्हेन प्लस प्लस C1 इज एग्जीक्यूटेड, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ C1 प्राइवेट डाटा मेंबर, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज C2 इज इक्वल टू प्लस प्लस C1. सो फर्स्ट इट विल इंक्रीमेंट द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ C1 ऑब्जेक्ट। सो C1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया इसने, प्रीवियस वैल्यू 1 थी 2 हो जाएगी, एंड देन इट असाइन इट टू द C2। और किस तरह से असाइन करेंगे कि वहां पर ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन में आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और उसमें काउंट की वैल्यू को, जो C1 का काउंट है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 2 करके, और वो वैल्यू आप उस कंस्ट्रक्टर को फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड देन जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको आप रिटर्न कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट विल बी असाइन टू C2। इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू C2 के प्राइवेट डाटा मेंबर को असाइन हो जाएगी। नाउ C2 के जो काउंट की वैल्यू है, नाउ इट बिकम्स 2। देन you have two cout स्टेटमेंट जिसमें आप C1 और C2 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, these are 2 and 2. Now the next statement is this one. So ये जो स्टेटमेंट है इसमें सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा दैट इज असाइनमेंट। सो इसमें C1 की जो प्रीवियस वैल्यू है वो C2 को असाइन हो जाएगी, एंड देन C1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। पहले इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा, प्री में पहले इंक्रीमेंट कर रहे थे, पोस्ट में पहले इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। सो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ऑपरेटर प्लस प्लस इंट की फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट इज दिस फंक्शन हेयर। सो दैट इज दिस फंक्शन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि आप काउंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और इसको काउंट की करंट वैल्यू पास कर रहे हैं, पहले इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट बन जाएगा नेमलेस ऑब्जेक्ट विद द काउंट वैल्यू 2, ठीक है, एंड देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न, राइट, एंड मीनवाइल द काउंट इज इंक्रीमेंटेड। सो वो ऑब्जेक्ट जब रिटर्न होगा तो वैल्यू 2 इसको अगेन उसको साइन हो जाएगी C2 को, पहले भी 2 थी अभी भी 2 रह जाएगी, और अब काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। हियर द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, C1 इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है। सो C1 का काउंट जो है दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल इन दैट फंक्शन, राइट। सो C1 का जो काउंट है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 से 3 हो जाएगी, राइट, एंड देन when you print these two values, so it will print 3 and 2, right. So C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, C2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, because इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि C2 की जो करंट वैल्यू है that will be assigned to C2 object, and then C2 की जो प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू है that should be incremented, और वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी वैल्यूज। Now let's go to the program and see its execution. Okay, this is the program, right, and this is the function for the, so इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। For example, I can write count plus plus and then return counter count. So
दैट इज सेम थिंग कि अगर मैं इसको एक ही स्टेटमेंट में इस तरह से लिख दूँ और इसको कमेंट आउट कर दूँ, राइट। पर जहाँ पर इस स्टेटमेंट को मैं अलग अलग इसको लिखना मुश्किल है, बिकॉज अगर मैं पहले लिख दूँ रिटर्न काउंट और बाद में काउंट लिखूँ तो पहले वो रिटर्न हो जाएगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, राइट। सो आई हैव टू राइट अ कंपाउंड स्टेटमेंट इन विच द फर्स्ट इज द फंक्शन कॉल, फंक्शन जो एग्जिट कॉल होगी दैट इज विद सिंपल काउंट, एंड देन फंक्शन कॉल के बाद काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो पहले जो फंक्शन कॉल होगी, जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो काउंट की जो करंट वैल्यू है उसके साथ कॉल होगा, ऑब्जेक्ट नेमलेस बनेगा और काउंट की जो करंट वैल्यू है 2 वो उसको असाइन हो जाएगी, एंड देन जो काउंट की वैल्यू उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। किस काउंट की वैल्यू को? इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के काउंट की वैल्यू को, बिकॉज दिस काउंट इज अ प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट रूटीन, जो इस रूटीन को इन्वोक कर रहा है ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज C1, राइट। So let's compile and execute this program. Now you can see the value of C1 is 3 and C2 is 2. I hope you understand this, the difference between the pre-increment and the post-increment function call, the overloaded functions. So that is the end of our today's lecture. In today's lecture we have seen the operator overloading. That is a very powerful feature in C, and C only allows to overload the operator that is present in the operator list of C++ language, and it won't allow us to create a new operator. And while overloading operator, it is not possible to change the precedence, associativity, and the number of operands, to change the number of operands of that operator, right. So in the next lecture we will write some example program for the same unary operator, and then we will come to the binary operators. Thank you very much.